इस वीडियो में हम गेट 2025 का क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया था फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से, मतलब रियल एनालिसिस से। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर द फंक्शन एफ फ्रॉम R2 to R2 गिवन बाय if xy is equal to I'm just writing the function x cube minus 3xy square minus 3x, this is, and 3x square y minus y cube minus 3y. So this is what our f is. Now then the function f, then the inverse function theorem is applicable at all the points of R2, not applicable at exactly 1 point of R2, not applicable at exactly 2 point of R2, not applicable at exactly 3 point of R2. Now we know that the inverse function theorem, the inverse function theorem is not applicable at x0 y0 if the determinant of the corresponding Jacobian matrix at the point x0 y0 is 0. इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जैकोबियन मैट्रिक्स होता है उस जैकोबियन मैट्रिक्स का वैल्यू अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू एट द पॉइंट x0 y0 अगर 0 होगा तो इनवर्स फंक्शन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जैकोबियन मैट्रिक्स कैलकुलेट दिस, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लेते हैं। एफ एक्स वाई को हमें क्या करना है, एफ एक्स वाई को हमें लिखना है ऐसे u and v form, where u is equal to x cube minus 3xy square, ठीक है ना, माइनस 3x, एंड v को लिखना है हमें ऐसे 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब माइनस 3y। सो हम जो फर्स्ट फंक्शन था उसे हम u, वी आर कंसीडरिंग दैट फंक्शन हैज टू बी u, और जो सेकंड फंक्शन था उसको हम v कंसीडर कर रहे हैं। देन द जैकोबियन मैट्रिक्स j वो क्या होता है, j होता है डेल u डेल x डेल u डेल y डेल v डेल x डेल v डेल y, ठीक है ना। अगर वो मोर देन 2 वेरिएबल, तो इफ इट इज इफेक्टिव फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल उसे भी आप कर सकते हो, इफ इट द फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल उसे भी आप कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग जैकोबियन मैट्रिक्स आप यू कैन फाइंड दैट। सो इसका जैकोबियन मैट्रिक्स क्या आएगा, अगर आपको आप इफ यू डिफरेंशिएट पार्शियली u with respect to x, what you would get 3x square minus 3y square minus 3. Okay, if you differentiate u with respect to y, you what you would get minus 6xy, ठीक है ना। if you differentiate v with respect to x, again you would get 6xy, and if you differentiate v with respect to y, you would get 3x square minus 3y square minus 3. So that is what you'd get. Now let's calculate the determinant of the corresponding Jacobian matrix. So det of j is equal to, we need to multiply this, and then so that would be 3x square minus 3y square minus 3 whole square plus 36x square y square ना, okay ना, ठीक है ना। So this is the square of two term. So if we take, देखो हर टर्म में 3 कॉमन है, so I am writing 9 x square minus y square minus 1 whole square plus 36 xy whole square. Now we know that square of two terms is equal to 0 if and only if each of the term is 0. So हम इससे क्या बोल सकते हैं, x square minus y square minus 1 का वैल्यू 0 आएगा और xy का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है ना। Now if x is equal to 0 तो क्या आएगा, अगर x 0 आएगा तो इससे हम y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सो y का तो कोई रियल वैल्यू आएगा नहीं, सो x कैनॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो अगर x 0 नहीं होगा तो y को तो 0 होना ही होगा, सो y इक्वल टू 0। सो y अगर इक्वल टू 0 होगा तो इससे हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, x स्क्वायर इक्वल टू
माइनस वन इक्वल टू जीरो, इससे हमें x का वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन. सो द corresponding Jacobian matrix would be 0 at the point 1 0 and minus 1 0. So इससे हम क्या बोल सकते हैं, there are exactly 2 points where the inverse function theorem is not applicable. ठीक है ना, at exactly 2 points, which is our option C. So option C हमारा correct option आएगा. It was really an easy question and thank you everyone.